Sadia, you can start. अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैमिली लॉ इंफॉर्मेशन पे सेशन नंबर 2 कर रहे हैं। मेरा नाम सादिया है। मैं कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन की तरफ से टुवर्ड्स वायलेंस फ्री होम पे पंजाबी उर्दू पीयर के तौर पे काम कर रही हूँ। और मैं आपको सिस्टर विसाम से कहना चाहती हूँ जो कि कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन की तरफ से टुवर्ड्स वायलेंस फ्री होम के प्रोजेक्ट पे हमारी प्रोग्राम सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रही हैं। ये सेशन कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम लीगल सर्विसेज कनाडा के बामी इश्तराक से पेश किया जा रहा है। और आज हमारे गेस्ट स्पीकर ब्रदर मुस्तफ़ा खान हैं और उनकी मुआवनत करने के लिए ब्रदर तोसीन सैयद उन किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन ने टुवर्ड्स वायलेंस फ्री होम का ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया है कि बाज़ लोगों को इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत होती है और उनके पास काफ़ी मालूमात नहीं होती हैं। और इसके अलावा मुस्लिम लीगल सर्विसेज भी कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन के इश्तराक से हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमें फ्री मालूमात पहुंचाई जाएंगी। ब्रदर मुस्तफ़ा का मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये मुस्लिम कम्युनिटी और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं जीटी एरिया की के एरिया से। और ब्रदर मुस्तफ़ा बैरिस्टर और सॉलिसिटर के तौर पर फैमिली लॉ के लिए ओंटारियो क्रिमिनल लॉयर और ओंटारियो लॉयर के तौर पे काम कर रही हैं। और ज़्यादातर ये डाइवोर्स, इमिग्रेशन, सेपरेशन, बच्चों की कस्टडी और बच्चों के खर्चात और इस तरह के दूसरे मालूमात पे इस तरह के दूसरे चीज़ों पर मालूमात फ्राहम करते हैं और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं और ज़्यादा डिले किए बगैर ब्रदर मुस्तफ़ा को माइक देती हूँ। Thank you, Sister Sadia, introduction के लिए। इंशाल्लाह हम आज सेशन 2 separation, divorce support और equalization के issues के पर डिस्कस करेंगे। सेशन आपको पहले हमको डिस्क्लेमर देना है। ये इंफॉर्मेशन सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कोई इसमें कोई लीगल एडवाइस नहीं है। जो आपके पास लीगल इश्यूज है आपको लॉयर को रिटेन करना है और उससे लीगल एडवाइस लेना चाहिए। इंशाल्लाह आज if there's time हम questions लेंगे मगर वो भी informational purposes के लिए सिर्फ answers देंगे। ओके, हमारे पहले इशू है सेपरेशन क्या है। ओके, तो पहले आपको सोचना है पहले सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे क्या लीगल मैरिज है और क्या कॉमन लॉ स्पाउसेस है। दोनों इंस्टेंस और दोनों केसेस में सेपरेशन होता है मगर आपको देखना है कब सेपरेशन होता है। कनाडा में वो सिस्टम है, वो देखते 3 फॉर डिवोर्स, वो देखते 3 क्राइटेरिया। एक पे आप सेपरेट एंड अपार्ट आप लिव करते हैं 1 साल के लिए, या वो अडल्टरी और फिजिकल और मेंटल क्रूरटी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस भी कहला सकते हैं। सबसे ज्यादा केसेस वो सेपरेशन होते हैं जब दो और या एक स्पाउस लगता है इस मैरिज खत्म हो गया, वो इसकी इंटेंशन है ये मैरिज हमारे लिए खत्म है।
So the important thing, सबसे important thing is आपकी intention या आपके spouses के intention. जब आपके intention बनता है, फिर उसके बाद आप social आप separated हो गए. It's like it's not a specific legal test, but it's more आपके circumstances देखते हैं. So हो सकता है आप एक you and your spouse you have an argument, and then someone says that after this we're done, okay? But then the next day they continue as if they're married. Task, if I'll just ask you to translate this part after, but so just because someone says they're done with this marriage, but if they don't act as if they're done with this marriage and they continue to be like your husband or wife, you continue to act like that, then you're not really separated. You're separated when after someone feels that this marriage is over and they stop talking to each other and behave differently now, then at that point you can say that, okay, we are separated. तो मुस्तफा का कहने का मतलब ये है कि घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन एक दफा लड़ाई हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेपरेशन का पीरियड शुरू हो गया. बहुत सारे मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस होते हैं. कुछ लोग होते हैं जैसे दुबई में काम कर रहे हैं और कनाडा में रह रहे हैं, तो फिजिकली तो वो एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन उनकी नीयत ये है कि अभी भी उनकी शादी हुई भी है. तो अगर घर पे थोड़ा बहुत लड़ाई हो गई या फिर कोई अनबन हो गई, जब तक दोनों में से एक इंसान ये नहीं बोले कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मेरी नीयत नहीं है तुम्हारे साथ रहने की, उसके बाद वो छोड़ के चला जाए 1 साल के लिए, उसके बाद सेपरेशन कंसिडर होती है. उससे पहले सेपरेशन नहीं होती है. थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं उनमें सेपरेशन कंसिडर नहीं हुआ जाता है. चेंज ऑफ बिहेवियर होना जरूरी है कि किस तरह से आप अपने स्पाउस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस पे चेंज आना जरूरी है. और नियत और मुंह से बोलना जरूरी है कि अब से हम लोग खत्म हो गए. Or and as well as the other important thing is to, with if, as Taz said, that Tasin said that maybe you've left and you were done with the marriage, but 1 month or 2 months later you decide that I'm going to try again to be your spouse, and then you start living together again. That is, your separation still separated unless you lived like that for 90 days in total. That can mean that you try again, 1 month doesn't work out, you go away, you come back the next month, after a month, and again you live for like another 2 months together and it doesn't work out. If 90 days in total happen within that 1 year where you try to fix your marriage, then the separation restarts. But if it's less than 90 days, then you don't have to restart the separation period. Tasin, if you could translate that. तो इनका मतलब ये है कि 1 साल में 660 दिन होते हैं ना, तो ये पूरे साल में आप दोनों की नियत या फिर आप में से एक की नियत ये होनी जरूरी है कि अब हम लोग साथ नहीं रहेंगे. अगर सुलह रहमी करने की इंसान कोशिश करता है और फिर वो कहता है कि व्हाट, मेरी मॉम ने या फिर मेरे भाई ने किसी ने मेरे साथ मशवरा किया और उसने बोला कि वापस चले जाओ, और फिर वो वापस जाके उनके साथ रहती हैं या रहता है, तो 90 दिन अगर ये लोग साथ रह लें तो फिर सेपरेशन कंसिडर होती कि हुई नहीं थी, कि सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुई थी. तो फिर वो क्लॉक वापस शुरू हो जाती है उस दिन से जिस दिन 90 डे खत्म हुए और आप उनके साथ रह रही हैं. तो फिर उस पॉइंट से आपको इस वापस सेपरेशन करना पड़ेगा और फिर वापस क्लॉक शुरू से 1 साल इंतजार करेगी. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पिछले 4 साल से हर साल मैं 3 महीने इससे दूर रह रही हूँ और 3 महीने इसके साथ रह रही हूँ. ऐसे नहीं चलता. आपको कंटिन्यूअसली 1 साल के लिए 90 डेज से कम उनके साथ रहना पड़ेगा, वरना आपका सेपरेशन क्लॉक वापस शुरू हो जाएगा. अगर के आप लोग सेम घर में रहते हैं या फिर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है कि आप कहीं और जा सकें, तो फिर उसके भी मुख्तलिफ
तरीके हैं उसको क्रैकल करने के लिए, जो मुस्तफा आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुसलमानों में बहुत होता है कि उन लोग को ये लगता है कि सितंबर में उसने मुझे तलाक दी थी, मुंह से तलाक बोला था, और फिर अगले सितंबर में मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आप सितंबर के बाद 6 महीने भी हो गए, जुलाई में अगर आप उसके साथ जाके वापस रहती हैं 3 महीने के लिए, तो इसका मतलब है कि वापस क्लॉक रीसेट हो गई। Can we ask questions right now? Ask the questions at the end. So if either you can type it in the chat or you can write it down, and then you'll have time at the end. It's best to just write it down. Thank you. Thanks. Okay, so जैसे टास्क बोल रहा था, हो सकता है आप सेपरेट होंगे, मगर आपके फाइनेंसेस नहीं, जैसे आप खुद से घर खरीद कर सकते हैं या रेंट पे कर सकते हैं, राइट? तो कोर्ट्स रिकॉग्नाइज करते हैं दैट यू कैन बी सेपरेट, मगर एक लाइक घर में रह सकते हैं, मगर थोड़ा यू हैव टू शो द कोर्ट, आपको कोर्ट को दिखाना है दैट आपकी लाइफ चेंज हुई भी है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप दूसरे रूम में, लाइक यू स्लीप इन सेपरेट रूम्स, आप यू डोंट डू द चोर्स फॉर ईच अदर, you don't go to social activities together, you don't eat together, or they don't talk to each other. Or the other thing is that's very important, that even if your husband or your wife is paying for the household expenses, as a rent hota hai or groceries or aise cheezein, that doesn't mean your separation is not over, is invalid. So you can still live together, but separately, as long as you maintain separate lives in the same house. Tasif, if you want to clarify anything I said. तो इनका कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पे आती हैं या फिर पाकिस्तानी लड़के यहाँ पे आते हैं, तो फिर उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उनकी नीयत होती है कि वो लोग सेपरेट करें, क्योंकि वो लोग सेम एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही एड्रेस में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सेपरेशन नहीं हुई। मुस्तफा पहले बात कर रहे थे नीयत की, कि नीयत होनी चाहिए कि अब हम लोग साथ नहीं हैं। उस पॉइंट से रिकंसिलिएशन के सुलह रहमी नहीं हो सकती 90 डेज के लिए। तो कि अगर मुस्तफा जैसे कह रहे थे कि आप लोग साथ इवेंट्स में नहीं जाते हैं, अगर किसी सहेली की शादी हो रही है तो फिर वो अपने हस्बैंड को नहीं लेके जाए, राइट? अगर के बर्तन धोने हैं तो फिर मैं अपने बर्तन धोऊंगी, तुम अपने बर्तन धो, राइट? तो सिर्फ इस वजह से कि कोई इंसान पे करे, इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन हो। Okay, so separation established के लिए बाद, like आप देखते हैं आपको डिवोर्स एप्लीकेशन कोर्ट में डालना है, और आप जो 3 फॉर्म सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है डिवोर्स के लिए, ओके? एक है फॉर्म 8, दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपके डिवोर्स क्लेम में जाता है और दूसरे क्लेम सपोर्ट के लिए और प्रॉपर्टी की क्लेम इस फॉर्म में डालते हैं। और दूसरा फॉर्म है एफिडेविट फॉर्म 35.1, उस फॉर्म के ये फॉर्म है आपके बच्चे के इंफॉर्मेशन डालते हैं और आपके प्रपोजल, क्या पेरेंटिंग प्लान प्रपोजल आप इस फॉर्म में डालते हैं। अगर तो क्रिमिनल चार्जेस है और दूसरे बच्चे हैं, ये भी इस फॉर्म में आप डालते हैं। और डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस की जो फैक्ट्स होते हैं, लाइक कोई स्पाउस अब्यूसिव है, इस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन डालते हैं। और आखिरी फॉर्म है कहलाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप प्रॉपर्टी क्लेम्स करते हैं, स्पेसिफिकली एक है फॉर्म 13.1, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके सारे एक्सपेंसेस, आपके इनकम इंफॉर्मेशन डालते हैं, आपके एसेट्स इंफॉर्मेशन और आपके लायबिलिटीज जैसे क्रेडिट कार्ड डेट या मॉर्गेज और ऐसी चीज़ें उस फॉर्म में डालते हैं। और आपके जो गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस, आपके वेडिंग ज्वेलरी, ये सारे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
डालते हैं. In filling out the form, आपको lawyer को consult करने, इसलिए the form gets complicated. If it's not completed correctly, and you file it, then you have to get the court's permission and the other side's permission to change anything in your form. If you could just get that last part about amending the. इनका कहने का ये मतलब है कि ये फॉर्म्स आपको लॉयर से ही के साथ बैठ के फिल आउट करने जरूरी है, आप ये खुद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो फिर आप उसको जाके करेक्ट नहीं कर सकते, आपको फिर वापस कोर्ट से बात करनी पड़ेगी, कोर्ट आपको जवाब देगा, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करके फिर आपको उसका अमेंड करेंगी और फिर आप वापस देंगी. तो इन चीजों में बहुत टाइम लगता है. तो मुस्तफा कह रहे हैं कि आप लॉयर के साथ ये फॉर्म्स फिल आउट करिए और उनके मशवरे के साथ फिल आउट करिए और एक ही दफा सही तरह मुकम्मल तरीके से उनको कंप्लीट करके फिर एक दफा सबमिट करिए ताकि फिर आपका पेपर वर्क टाइम से हो जाए. कभी क्वेश्चन आते हैं आप कब डिवोर्स एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकते हैं, राइट? आप डाल सकते, सेपरेशन के बाद डाल सकते हैं, मगर डिवोर्स नहीं मिलेगा until 1 साल पास हो गई आपकी सेपरेशन के लिए. तो सोचो the idea is that जब आप separate होते हैं, that you have, the courts want you to take the 1 year जो बहुत सारा other claims है, 1 साल में आप दूसरे साइड के साथ negotiate करो और court में appearance करो and try to settle all your issues 1 साल में, and then फिर once 1 year after separation over फिर divorce मिल सकता है. That is the idea. Tosin, if you want to clarify anything about that. तो मुस्तफा कह रहे हैं कि डिवोर्स का जो पेपर वर्क है और इन्होंने जिन 3 फॉर्मों के बारे में आप लोग से जिक्र किया है कि इनमें डिस्प्यूट्स होते हैं, आगे पीछे बात होती है, एक तरफ एक बात कहता है, दूसरी तरफ दूसरी बात कहता है. इनका कहने का मकसद ये है कि सेपरेशन 1 साल के लिए होनी जरूरी है, जो कि 360 दिन है. उन 360 दिन में मुस्तफा कह रहे हैं कि आप अपने बाकी जो पेपर वर्क हैं, बाकी जो आपको बात करनी है कि बच्चों के साथ क्या होगा और कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, ये सारे काम आप उस वक्त करें और आप लॉयर लें और उस वक्त निगोशिएशन शुरू कर दें, ताकि फिर जब 1 साल हो उसी वक्त आपकी डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगी, आपका सारा कागजात आपके पास होगा. और फिर इनका कहने का मकसद ये कि ये सबसे आइडियल सिचुएशन है कि इस तरह से करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा और आपका बहुत टाइम बच जाएगा. Right. And दूसरी चीज है that if you start you need to start the application sooner than later, because once you start the application, you can ask the court to get orders, temporary orders for child support and spousal support, so that you don't have to wait very long to get some money to support yourself until you're fully divorced. तो ये कह रहे हैं कि जितने जल्दी आप ये पेपर वर्क फाइल करते हैं उतने ही आपके फायदे में रहता है, क्योंकि अगर कि आपके पास इनकम नहीं है तो फिर आप डिवोर्स से पहले आपको पेमेंट्स मिल सकती हैं कि ये स्पाउसल सेपरेशन है कि इतने पैसे इसको मिलेंगे बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए और इन तरह की चीजों के लिए अखराजात मिलेंगे. तो इसलिए इनका कहने का मतलब है कि डिवोर्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिल सकते. आपके बच्चों के लिए जो अखराजात हैं, क्योंकि सेपरेशन तो हो गई है ना, तो आप लोग सेपरेट जिंदगियां रह रहे हैं, तो उस सेपरेट जिंदगी को रहने के प्रूफ के साथ आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, मुझे पैसे इतने चाहिए आमदनी के लिए अपने बच्चों को पालने के लिए, जो कि इसके साथ मैंने बच्चे पैदा किए. तो इस वजह से आपको कोर्ट फिर 1 साल होने से पहले वो पैसे देना शुरू कर देगा. And as well as for when you get separated, before you separate, you should also make sure to take all the information down as you need it. So for the forms like the financial statement, आपको पता होना चाहिए आपके account information क्या है, the password or login information for the bank जो online account है,
और आपके credit card information, loans, सब कुछ आपको देखना है, date of separation, how much you owe and how much is in your bank account, because their lawyer is going to need this information. And if you have a joint account, then you're entitled to half of what is in that joint account. Most of the time, you want to make sure to take out half so that you have it in case. Make sure to keep track of it, put it in your own personal account, so that later in court, you can explain to the court that I took out half of the joint account money, and this is where it is, and this is how I spent it. मुस्तफा कह रहे हैं कि जल्दबाजी का काम सही नहीं होता है। आप जब सेपरेशन लेने की कोशिश करिए, जब आपकी नीयत बनी है कि आपको सेपरेशन चाहिए, तो फिर आपको अपने सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर क्या आप लोग के पास एक जॉइंट अकाउंट है, तो फिर उस जॉइंट अकाउंट में आप हकदार हैं आधा का। तो अगर $10,000 हैं जॉइंट अकाउंट में, तो 5,000 आपका है, 5,000 स्पाउस का है। तो फिर इनका मशवरा ये है कि ये इंतजार मत करें कि वो पैसे खर्च कर दे और फिर आपके पास कुछ खाने का नहीं हो, कुछ पीने का नहीं हो। आप जब सेपरेशन के लिए फाइल करें, आप अपने अकाउंट में जाइए, आप आधा विथड्रॉ कर लीजिए और फिर आप ट्रैक रखिए कि मैंने ये $5,000, जिस एग्जांपल की हम लोग बात करें, ये $5,000 मैंने किस अकाउंट में रखा था, किस तरह से इसके अखराजात हुए थे, कितना पैसे मैंने अपने बच्चों पे खर्च किया था, कितना पैसा मैंने रेंट पे खर्च किया था, जो भी आपके अखराजात हैं आप उसका ट्रैक रखिए और फिर कोर्ट को दिखाना है। बात रही पर्सनल अकाउंट्स के, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फाइनेंशियल अब्यूज होता है, तो फिर आपको सेपरेशन लेने से पहले अपने जो भी अकाउंट आपके नाम पे हैं उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके लॉगिन्स चाहिए, उनके अकाउंट नंबर चाहिए, उनके स्विफ्ट कोड्स एक्सेट्रा, हर चीज आपको लेना जरूरी है। और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि आगे जाके ये बहुत बड़े मसले मसाइल खड़ा कर देते हैं। Yeah, exactly. Yeah, and as Tas was saying, exactly that. A lot of times when the abuser might use financials to control your behavior, and so one way to take back control is to have access to those accounts. And if you're an account holder, a joint account holder, you can go to the bank and you can get the information from them or call them on their customer service and get the information if your name is on the account because you are an account holder. Mustafa, before you move on, would you mind shedding some light on whether or not they're allowed to kick you out of the home that you guys are both living in? So we'll get to that in later on the presentation when we discuss the matrimonial home. But to answer that question, both spouses, whether you own the house or whether you rent the house, both spouses have a right to live at the house. So if they try to kick you out or whatever, you have a right to live there. So they can't kick you out. And if you need a court order, you can get a court order to stay in the house and actually have them leave if it's going to be an issue. So you have a right to stay in the matrimonial home. मुस्तफा कह रहे हैं कि आगे जाके हम लोग इस बात में ज़्यादा गहराई के साथ बात करेंगे, लेकिन छोटा जवाब ये है कि अगर के आपके पास कोई रहने की जगह नहीं है तो फिर कोई भी आपको घर से निकाल नहीं सकता है। आप कोर्ट ऑर्डर भी ले सकती हैं कि आप वहाँ रह सकती हैं, और अगर जो आपको निकालने की कोशिश कर रहा है उसको कोई मसला है तो फिर वो कहीं और जाके रह सकता है, लेकिन आपको कोई यहाँ पे कनाडा में नहीं निकाल सकता घर से। लेकिन इस बात पे हम लोग आगे जाके और बात करेंगे। So in Canada में divorce के ground से वो कहलाते हैं no fault divorce. This means that जो spousal misconduct या extramarital affairs होते हैं, this is not relevant for the court. So any facts about cheating and anything like that, the courts are not going to consider it, and they will not ask you about it, or they do not care about it. All that matters is that you are separated and a year has passed before they give a divorce. And the support issues are dealt with if there's children at the time of divorce.
And for the foreign divorce, तो कभी होता है you get पाकिस्तान में शादी हुआ, फिर पाकिस्तान वापस, और एक spouse पाकिस्तान वापस गए, right, after separation के बाद, फिर पाकिस्तान से वो divorce मिल गया. ये Ontario में और Canada में वो recognize होते हैं foreign divorces, मगर एक condition है उस दूसरे एक spouse उस jurisdiction में ordinarily resident होना चाहिए. इसके मतलब 1 साल उस jurisdiction में रहना चाहिए divorce application के पहले. So like from my experience, पाकिस्तान एक होता है आप खुद से वो मर्द खुद से तलाक दे सकता है और council में application डाल सकते हैं divorce के लिए without the woman ever being present. In Canada, वो valid हो सकता है if he can show that he was there for 1 year and he followed the procedure of the Pakistani the council in the area that they live. If they followed the procedure, they lived there for at least a year before, then that you're divorced there and your divorce can be recognized in Canada. If Tawseen, if you can just, is there anything that needs to clarify there? तो इनका कहने का ये मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में डिवोर्स हो गई. अगर आपको कनेडियन डिवोर्स के लिए फाइल करना है तो फिर आपको ये शो करना पड़ेगा कि दोनों में से एक शख्स कनाडा में 1 साल के लिए पूरा रहा है. No, not what I'm saying. So what I'm saying is this: if someone goes to Pakistan, UK, America, right, to obtain the divorce, right, that divorce can be recognized in Canada if that spouse lived in that jurisdiction for 1 year before making the divorce application. Okay. So, तो फिर अगर आप लोग ने कनाडा में शादी की है और फिर पाकिस्तान में 1 साल के लिए रहने गए और फिर पाकिस्तान में आप लोग की डिवोर्स हुई है, तो फिर कनेडियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करेगा अगर कि आप लोग पूरे 1 साल के लिए पाकिस्तान में सेपरेट होके रहे. मतलब सिर्फ एक स्पाउस वहाँ जो उस jurisdiction में रहने ordinary resident बनना चाहिए. So दोनों spouses, they don't both have to live there. So only one has to live there. And उसके फर्क पड़ता है इसलिए जब आपको remarry करना है कनाडा में, right? मगर आपके पास foreign divorce है, आपको एक ये कहलाता है foreign divorce opinion letter. Lawyer से मिलना है, and the lawyer will write a letter. उस letter में explain करेंगे क्या divorce laws है उस country के लिए and whether the divorce was valid per this section 22 of the Divorce Act. और the आखिरी चीज है that कभी होता है जैसे तलाक होता है और इस्लाम में और दूसरे religions में different types of divorces भी होते हैं और जैसे वो Jews करते हैं और Christians भी करते हैं. Those are religious divorces. It has to follow the legal procedure. Just because someone gives 3 talaq, but they never do the procedure that's required by the country, that is not valid. It has to be done by the laws of the country. Okay. Okay. पहले issue हमको देखना है divorce में एक है child support. Yeah. So the child support provisions Family Law Act में है, Ontario Family Law Act में है, and उसमें criteria लिखा हुआ है क्या कैसे support मिल सकते हैं और किसके लिए support मिल सकते हैं. तो पहले से every parent has the obligation to support the child, and उस child की definition होता है जो है आपके biological child, right? आपके एप्लीकेशन डाल सकते हैं जो स्टेप चिल्ड्रन है और या आप मगर हम सिर्फ बात करेंगे जो आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं. तो पहला चीज है आप वो has to be under 18 और उसको स्कूल में एनरोलमेंट होना चाहिए. और कभी होता है आपके पास adult child है मगर 20-30 years old मगर उसके developmental disability है और उसके like mentality बच्चे के जैसा है और काम नहीं कर सकते और खुद से support नहीं कर सकते,
उसके लिए भी सपोर्ट चाइल्ड सपोर्ट मिल सकते हैं। कभी होता है एक child at 16 years old or older, उसको स्कूल नहीं जाना है and वो घर से निकलता है, right? He runs away or doesn't want to follow your rules. For those children, वो कहते हैं they have withdrawn from parental control. मतलब they're not dependent anymore on you. They do not want to be a part of a dependent for you. So then you cannot get child support for those children. So during marriage, there's an obligation. मगर after separation, हमारे लिए important है. ये child support बच्चे की right है, parents की right नहीं है. Parents सिर्फ वो administer करते हैं पैसे, मगर the right is of the child. ये सबसे important है court के लिए. इसलिए court बोलते हैं जब आप separate करते हैं, child support automatic right होता है. You don't even need an application. They should be paying from the first month right away for the child support. And if they are not paying, then you can apply court के application डाल सकते हैं. And जब आप court order मिलते हैं, एक organization उसके नाम है Family Responsibility Office. ये government agency है. उसके सिर्फ एक job है, वो track करते हैं कितने child support payment जो payor करते हैं और आप वो recipient को पैसे देते हैं. And जब payor नहीं करते payment, फिर वो ऐसे enforcement procedures कर सकते हैं, जैसे take away the driver's license या उसके wages ले सकते हैं और उसके tax returns ले सकते हैं. जो employment insurance उसमें से भी पैसे ले सकते हैं. उसके पास powers है, मगर आजकल issue है ये family responsibility के office के लिए COVID की वजह से बहुत सारे delays है. So it is good, मगर it's not always reliable. जब आप child support when there's an order for child support या आपको child support मिल रहा है, फिर आप उस payor के जो आपके spouse pay कर रहे हैं, आपके उसके information every year update करना है, इसके employment income update करना है. तो एक है CRA, वो बनाते हैं जो कहलाता है notice of assessment. उसमें दिखाते हैं आपके उसके क्या income थी वो एक साल पहले. उस basis पे आप देखते हैं उसके gross income, मगर मतलब tax से before income क्या है, and उस number से आप वो देखते हैं. legislation में है एक table. उस table में आप वो example देंगे थोड़ी देर में, but उस table में आपको दिखाते हैं कितना child support pay करना चाहिए. तो every year आपको update करना है इसके income क्या है. हो सकता है कभी वो child support नहीं करते हैं for many months. फिर आपके बच्चे के right है उस month जो miss हो गए, आप भी application डाल सकते हैं उस amount को आपको pay करने के लिए. वो कहलाते हैं child support arrears या retroactive child support. What happened to Puppy? I did fishy, that's why it stopped. Okay. इस slide आप बाद में देख सकते हैं, थोड़ा specifics है enforcement के लिए. Okay, so for example, इस example में ये एक payor के income 50,000 gross है. Before taxes, इसके income $50,000 per year है. Okay. If you have आपके पास एक बच्चा है, फिर every month उसको $461 pay करना आपको. अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, फिर $755 a month. 3 बच्चे हैं, फिर $977 a month. और ऊपर जाते हैं
and up to like 6 children, and then the amount वो fix करते हैं. मगर इस सिर्फ example है आपको like अंदाजा करने के लिए that the amount goes up for every child and also depends on their income. वो child support के लिए आपको उसके necessities of life afford करते हैं इसमें से. So जैसे खाना है, clothing, shelter, ये necessities child support से आते हैं. मगर कोई expenses उससे ऊपर भी है, right? वो उसको कहलाते हैं special and extraordinary expenses. इस section और court में commonly आप सुन रहे, you hear a lot, it has section 7 expenses. इसलिए child support guidelines में है एक section 7, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कौन से expenses child support से ऊपर है. For example, जो daycare expenses है, वो medical expenses जैसे prescription medication या जो dental expenses जैसे cleaning, teeth cleaning, orthodontics, school fees, कभी वो trip कभी trips में जाते हैं या sports में activities करते हैं और uniforms भी होते हैं. वो सारे expenses है वो section 7 expenses बनते हैं. जब आपके बच्चे after 18 years old university या college या trades में जाते हैं, फिर वो tuition के लिए textbooks और residence के लिए भी आप application डाल सकते हैं वो expenses को share करने में. The important thing is इसके लिए section 7 के लिए वो आप और आपके spouse share करते हैं ये expenses. The expenses are shared proportionate to income. Meaning, if he earns 50,000 and you earn 40,000, you will probably share it 55% and 45%. So they don't pay for all of it; you pay for some of it as well. And आपको दिखाने उसको आप सारे receipt or invoices जो expenses आप claim कर रहे हैं, आप वो उसको disclose करने आपके spouse को in order to get reimbursed. Faustin, can you just explain the proportion income part? I don't. मुस्तफा का कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 7 के मुताबिक जो बच्चों के एडिशनल अखराजात होते हैं, जैसे डेंटल केयर हो गया, डे केयर में जब बच्चों का ख्याल रखना होता है, स्कूल की फीस होती हैं और बुक्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इनके आप रिसीट्स लेकर गवर्नमेंट को अगर दिखाएंगे तो फिर आपको कोर्ट वो रीइंबर्स करेगा, लेकिन पूरा नहीं. आपकी इनकम देखी जाएगी और फिर आपकी स्पाउस की इनकम देखी जाएगी और फिर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी. इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक स्पाउस 55,000 कमाता है और एक हाउस 45,000 कमाता है, तो फिर एक 45% देगा और एक 55% देगा, ताकि फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो. सारे पैसे एक जगह से नहीं आते हैं, आप दोनों शेयर करते हैं उन एक्सपेंसेस को, और इसको कहते हैं सेक्शन 7. और इसके वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाने चाहिए, बिकॉज उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखेंगे आपके इनकम क्या है, एंड उस बेसिस पे आप देखते हैं सेक्शन 7 के लिए कैलकुलेशन क्या है. बहुत सारे दफ़ा होता है क्लाइंट के साथ, वो बोलते हैं मैंने फाइनेंशियल क्यों दिखाने चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज आपको दिखाने से आपके इनकम क्या है सेक्शन 7 के लिए कैलकुलेशन करने के लिए. इफ यू डू नॉट डिस्क्लोज इट, फिर आप नहीं मिल सकते, बिकॉज द कोर्ट और दूसरे पार्टी को दे हैव टू नो आपके इनकम क्या है बिफोर डिटरमिनिंग इट. आपके इनकम मतलब जो अमाउंट्स मिलते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट या बेनिफिट्स और ऐसे चीज. कभी होता है आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस या आपके स्पाउस के पास एम्प्लॉयर से बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट, और बच्चे उस बेनिफिट्स में है, आप उस बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 7 एक्सपेंसेस के लिए पहले,
फिर उस बेनिफिट के बाद जो अमाउंट है फिर उस अमाउंट को शेयर करते हैं. सोचो बेनिफिट्स कवरेज है डेंटल के लिए, एक है प्रोसीजर for $500. बेनिफिट सिर्फ 80% कवर करते हैं, $200 left over हो गया, फिर you share only the $200 expense between you two. Lastly, वो definition के लिए extraordinary क्या है? Extraordinary के मतलब है जो expenses child support खुद से नहीं कवर कर सकते हैं, एंड हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे हुए, एंड आपको आपके लॉयर को के साथ एडवाइस लेना चाहिए क्या एक्सपेंसेस आप अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 7 प्रिंसिपल को. ओके, सो स्पाउसल सपोर्ट ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए स्पाउसल सपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. ओके, बहुत सारे इश्यूज है इसके साथ, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है कितना आपको स्पाउसल सपोर्ट मिलते हैं और किस सर्कमस्टांसेस में स्पाउसल सपोर्ट मिल सकते हैं. आपको पहले चीज आपको अंडरस्टैंड करने हैं, चाइल्ड सपोर्ट स्पाउसल सपोर्ट से प्रायोरिटी है, या मगर मतलब उससे चाइल्ड सपोर्ट स्पाउसल सपोर्ट से इम्पोर्टेंट है. तो जब कोर्ट देखते हैं आप वो पहले देखते हैं चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट करने, फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्पाउस सपोर्ट के लिए स्पाउस सपोर्ट बात करते हैं, मगर चाइल्ड सपोर्ट प्रायोरिटी है स्पाउसल के ऊपर. तो स्टार्टिंग पॉइंट है फिर से फैमिली लॉ एक्ट में, every spouse has an obligation to support themselves and their other spouse to the extent they are able to. This definition बहुत important है because एक है self-sufficiency, आपको कोशिश करने आपके खुद like yourself support करने के लिए दोनों spouses. फिर दूसरा है जो आप जो एक्सपेंस आप नहीं कर सकते, आपके खुद से self-sufficiency नहीं कर सकते हैं, then the other one should be helping you out. फिर आप वो देखते हैं आपके नीड क्या है और देखते हैं आप उसके एबिलिटी टू पे क्या है. एंड स्पाउसेस की डेफिनेशन बहुत बड़ा है. स्पाउसेस है जो वो लीगली मैरिड है या कॉमन लॉ मैरिज है, तो सारे स्पाउसेस को ये इस क्लेम डाल सकते हैं. एक है spousal support advisory guideline. The court looks at this guidelines not to decide if you should get support, but to decide how much. Meaning they will look at if there's child support, they will look at how long you've been married, the roles in the marriage, sacrifices you've made for the family, and the difference of income of the parties after separation. Tasin, if you could just get that part for me. मुस्तफा कह रहे थे कि स्पाउसल सपोर्ट मिलने से पहले चाइल्ड की प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि स्पाउसल सपोर्ट जो मिलता है वो मिलना जरूरी है, कितना मिलेगा उस पे बात होती है. तो फिर ये देखा जाता है कि कितनी देर के लिए शादी हुई है, कि कितनी सैक्रिफाइसेस किए हैं किसी इंसान ने. फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़की ने पूरा अंडर ग्रेजुएट खत्म किया था और उसने फिर काम छोड़ दिया फैमिली को बच्चों को पालने के लिए, तो फिर उसको भी कंसिडर किया जाता है. और ऐसे बहुत से मुख्तलिफ रीजन है जिनको कंसिडर किया जाता है, और फिर जाके आपको फाइनल पेमेंट मिलती है कि इतना स्पाउसल सपोर्ट के लिए आप ड्यू हैं. So just to clarify one thing, the entitlement for spousal support has to be established first before you can ask how much. So it's not a given that you will get it. You have to show why you should get it to the court. So to decide that, the court looks at different factors.
just I have it on the slide, but in short, what it means is that they want us to share the effect, the economic effect of separation, of divorce between the parties. So one party is not more better off than the other after the divorce has happened. So this is to basically equalize the burden between the parties. If you could clarify that. तो ये कह रहे हैं कि स्पाउसल सपोर्ट के लिए आप लेजिबल होने ज़रूरी है कि आपको ये पहले दिखाना पड़ेगा कि मुझे स्पाउसल सपोर्ट की ज़रूरत है या फैमिली को स्पाउसल सपोर्ट की ज़रूरत है। जब कोर्ट वो अप्रूव कर देगा फिर आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट ड्यू है और किस वजह से ड्यू है। और कोर्ट का मकसद ये है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि एक बंदे को ज़्यादा मुश्किलात नहीं हो in reference to the other. Yeah. Is there something more that I need to say? Oh, that's right. That's right. We're going to get into some of the more details. So, so there's different grounds for spousal support. एक है spousal support, compensation and contractual basis पे. Okay, so जो सबसे बड़ा केस है ये कहलाते हैं मोगे and मोगे. So in this case, वो कोर्ट डिस्कस करते हैं क्या ग्राउंड है स्पाउस सपोर्ट मिलने में इन कॉम्पेंसेशन। सो ये वो फैक्टर्स देखते हैं whether or not how much of a loss or disadvantage is someone from the role they played in the marriage, and how much benefit the other had. So in the example that we just gave, if you were studying, but then you let go of your career so that they could progress their career, this is the case that would go under compensation. I give up my right to get a career so that you can get one. So it makes a situation where there is a contract between you that you will benefit and I will take sacrifice, but I will be compensated at the end. Can you just? तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी शादी के लिए और फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करता है तो फिर उसका एक अनबोला कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं घर पे रह के बच्चों की देखभाल करूंगी या खाना बनाऊंगी या ये करूंगी, या फिर मैं घर पे रह के घर की सफाई करूंगा, बच्चों को देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और आप जाके काम कर लीजिए। तो फिर एक बंदे ने सैक्रिफाइस किया ताकि फिर पूरी फैमिली को बेनिफिट हो सके, तो फिर उसका कॉम्पेंसेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट कि इस बंदे ने इन सर्कमस्टेंसेस में ये चीजें छोड़ी थी ताकि फैमिली प्रोग्रेस कर सके, तो फिर आपको उसके लिए कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। Yeah, and compensation के basis में support claim बनाने में बहुत it's much stronger. दूसरा basis है वो कहलाता है needs based या non compensatory, और needs आप देखते हैं आपके inability to pay for your basic needs and a significant decline in your standard of living. For example, if you were married and you were living in a full house with a pool and a very large backyard and you had your own car in a nice neighborhood, but after you got divorced, you're living in a basement, 1-bedroom apartment with all the children. This is an example of a drastic change in standard of living. So the amount of support that you should receive should reflect that should equalize the amount, like your standard of living. It shouldn't be so much worse than it was before. So maybe you don't live in a full house now, but maybe you're going to live in a townhouse or something comparable to what you were living before. And so the spousal support is to help you so you can afford that type of living that you're already used to from your marriage. And you can explain. मुस्तफा कह रहे हैं कि स्पाउसल सपोर्ट बहुत ही मुख्तलिफ हिस्से होते हैं इसके।
तो एक उनमें से हिस्सा होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, कि आप किस तरह से रह रही थी या आप रह रहे थे, और आप कहाँ रह रहे थे, किसके साथ रह रहे थे, आपके साथ क्या कन्वीनियंसेस थी, कितनी गाड़ियां थी, खाने का तरीका क्या था। तो आप उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत ज्यादा गिर जाएं तो फिर ये कोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं समझता, ना ही ये मुनासिब समझता है। तो फिर कोर्ट आपको इंक्रीज करके देता है उस हिसाब से, ताकि फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो, लेकिन इतना ना हो कि आपका रहना मुश्किल हो जाए। Yeah, and it's important to know, kabhi hota hai, he's already in his career, and every year his income goes up. Uh, that doesn't mean the spousal support will also go up to that same amount. It depends on whether or not the need of the person can be met or needs to be met with an increased amount of support. So just because he can pay more doesn't mean he has to pay more. You have to show the need that, that needs to justify the newer, more expensive, or more increased amount of support. तो इनका कहने का मतलब है कि अगर डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है और स्पाउसल सपोर्ट मिल चुका है, और फिर जो स्पाउस है जिसके साथ डिवोर्स हुई है उनका सैलरी इंक्रीज हो जाता है या उनको पैसे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्पाउसल सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। आपका स्पाउसल सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए आपको कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि इन इन अखराजात की वजह से, इन इन वाक़यात की वजह से आपको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको विदाउट पिटिशन नहीं मिल सकता। And also another important thing is that if you get in a new relationship, how is your spousal support affected? If you have a new partner, the other spouse always says, they commonly say that, oh, she has another person with her, living with her and paying her expenses. Why should I pay all the support? If she has another, spouse, or she get remarried. So this is true to an extent. If your case is that, this is compensation for the sacrifices I made, then it doesn't matter so much if you remarry or have a new partner. Magar, if you have a needs-based compensation claim, like if you have a needs-based claim for spousal support, then the courts may consider a new relationship in deciding how much support should be paid or if it should be reduced. अगर आप लोग को याद होगा तो मुस्तफा ने बोला था कि कॉम्पेंसेशन सबसे ज्यादा ताकतवर किस्म का स्पाउसल सपोर्ट होता है। तो इन्होंने अब ये बात की है कि अगर आपने कॉम्पेंसेशन की वजह से स्पाउसल सपोर्ट अप्लाई किया था, तो फिर अगर के एक नया रिलेशनशिप हो या नई शादी हो, तो फिर आपका स्पाउसल सपोर्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने जो सैक्रिफाइसेस किए, जो चीजें आपने अपनी जिंदगी में छोड़ी थी फैमिली के लिए, अभी भी आपने वो चीजें छोड़ दी हैं। लेकिन अगर के आपका स्पाउसल सपोर्ट इसलिए मिल रहा है कि आपकी नीड्स मेट हो, कि आपको खाना खाने को मिले और ये सब चीजें हो, तो फिर अगर नया रिलेशनशिप होता है तो फिर उसमें फर्क पड़ सकता है। तो फिर इसलिए जिस तरह से ये पहले कह रहे थे कि कॉम्पेंसेशन का केस करिए, तो फिर ये उसकी वजूहात थी। So ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, मगर so I will leave the slide. आप बाद में पढ़ सकते हैं and questions आ सकते हैं, मगर वो in short, basically what it means is that the court should first look at the division of your marital assets and the equalization payment, which we will discuss, before deciding how much spousal support, to see how much that division of assets will affect the amount of money you will have after separation. But it's a case-by-case basis, so you need to consult your lawyer to make sure to see how much you can really have after separation.
That's the whole slide. Atas, if you could explain that part. So मुस्तफा ये कह रहे हैं कि हर शादी का और हर डिवोर्स का एक अपना स्पाउसल सपोर्ट सिस्टम होता है और सबसे बेहतर ये है कि आप किसी लॉयर के साथ अपने केस को देखें और फिर वो आपको रिकमेंडेशन देंगे और वो आपको समझाएंगे किस तरह से आपको अप्लाई करना है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि पहले एसेट्स और इक्वलाइजेशन होते हैं और फिर स्पाउसल सपोर्ट की बात आती है कि किस तरह से होंगे। लेकिन क्योंकि हर शादी का और हर इंसान के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस वजह से एक लॉयर ही आपको समझा सकता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर क्या है। So हम भी इंक्लूड कर रहे इस प्रेजेंटेशन में है the calculations and examples. एक फॉर्मूला होता है जब आपके पास बच्चे नहीं है, उस calculation में आप देखते हैं from the different ranges होते हैं depending on your circumstances. कभी, so this is one example. When you have a child, the spousal support आप देखते हैं goes down a lot. इसलिए ज़्यादातर उसके इनकम चाइल्ड सपोर्ट में जा रहे हैं और जो पेमेंट्स कर रहे हैं, आपको वो भी देखना है इस ability to pay. If you उसके ability to pay lower है, फिर low range appropriate है, या आपके marriage short term की marriage है, फिर lower range is the correct one. वो जो marriages आप बहुत सारे sacrifices बन गए और बहुत 30 years marriage होने के बाद 3-4 बच्चे के बाद आप divorce कर रहे हैं, फिर higher range more appropriate है spousal support के लिए। आप बहुत सारे sacrifices आपके life में दिया इस marriage के लिए, तो the lawyer will advise you exactly what is the best range to look at. Okay, so properties में सबसे important property वो कहलाते हैं matrimonial home. This is कभी ये concept थोड़ा सा confusing होता है, इसलिए matrimonial home किसी घर बन सकता है, आपको ownership इसके, you don't have to be the owner. So matrimonial home की definition है जो आपका आप रह रहे थे spouse के साथ, बच्चे के साथ separation से पहले। अभी होता है आपके पास multiple properties है, right? और आपके पास सिर्फ एक matrimonial home बन सकता है। So आपको देखना है कौन सी घर आप matrimonial home में है, and आप उस घर उसकी title पे आप डाल सकते registry में designation, उसके कहते हैं matrimonial home designation. That way, if they want to sell the house, आपके consent लेने चाहिए sales के लिए, इसलिए ये घर regular property है, ये matrimonial home है। दूसरी चीज है सिर्फ married spouses के लिए division कर सकते हैं court में matrimonial home के, मगर common law spouses claim कर सकते हैं if वो उस घर के टाइटल पे है, जो टाइटल डीड है घर के लिए उसके joint owners बनते हैं। If you are common law spouse, आप भी claim कर सकते हैं ये asset के लिए। We were speaking before about the right to stay in the house. This right is called exclusive possession. It's in the legislation, and what it is that both spouses have an equal right to live in the home. This is also called possession of the home. And this right exists as long as you're still spouses. Once you have the divorce order, you don't have that right anymore. That right goes away. So it's important to know that you can always apply to the court, and you can stand firmly and say that you have a right to live in the house.
but that also applies to your spouse. So that's why you want to go to court and ask that you exclusively reside there, meaning only you and they cannot live there. And the court will usually grant this if, you know, there's circumstances where there might be harm to you or the kids if the other person is in the house. Sorry, can you just explain the last part of the exclusive possession? तो मुस्तफा बात कर रहे थे एक्सक्लूसिव पोजेशन की। शुरुआत में हम लोग ने जिक्र किया था कि कोई आपको घर से निकाल नहीं सकता है, ना ही आपके बच्चों को सड़क पे ला सकता है। तो फिर इस बात पे आप कोर्ट को ये दिखा सकती हैं या दिखा सकते हैं कि एक्सक्लूसिव पोजेशन चाहिए। एक्सक्लूसिव पोजेशन का मतलब ये होता है कि जब तक आप लोग की डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुई है, तो फिर 1 साल का जो पीरियड होता है जिसमें आप सेपरेट होते हैं लेकिन आप लोग की डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुई है, तो फिर उस टाइम पीरियड में आपके पास एक राइट है कि आप उस मैट्रिमोनियल होम में रह सकें अपने बच्चों के साथ। और अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ कर सकते हैं कि मेरे सिचुएशन और मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मुझे अकेले यहाँ रहना है अपने बच्चों के साथ और जो दूसरा स्पाउस है वो यहाँ नहीं रह सकता है, तो फिर आपको वो लॉयर के साथ प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में कि कुछ दफा वजूहात ये होते हैं कि बच्चों के लिए और या तो बीवी के लिए सेफ नहीं है, तो फिर कोर्ट फिर डिसाइड करता है कि ठीक है आपका अप्रूवल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर आप वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं और जो पर्सन ऑफ हार्म है जो कि इंस्टिगेट कर रहा है उसको फिर निकल के कहीं और रहना पड़ता है। Is that about accurate? Yeah, that's good. Yeah. Well, we're running short on time, so I'm gonna have to go a little bit faster. Okay, so you slide say the most important thing is the power of sale. So the first thing is that if it is a matrimonial home, then the person cannot sell it without the consent of the other spouse, and until a court order releases them or an agreement releases them from any rights to the house or to any family law issue like support or division of assets. Also, the power, like if they want to bring a motion to sell the house, and you can oppose the motion, and the strongest basis for that is if you are living there with the children, then the court will not authorize the sale of the house until there is proper accommodation available and made available for the spouse and their children. तो मुस्तफा ये कह रहे हैं कि एक तो जॉइंट ओनरशिप का सिलसिला होता है जिसमें आपके भी नाम पे घर होता है और वो 50-50 होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर के जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है जैसे घर, वो अगर घर बेचना चाहे लेकिन आप और आपके बच्चे उसमें रह रहे हैं या फिर हस्बैंड और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो फिर वो लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग के पास और कहीं रहने की जगह नहीं है, तो फिर आप ये घर नहीं बेच सकते और फिर कोर्ट ये अप्रूव कर देगा based on the circumstances. Yeah, and it's especially important in cases where the wife is, or maybe you're not on title of the house and you're just residing there as the spouse. They don't need your consent to sell unless it's a matrimonial home. So it's very important that you have designated as a matrimonial home, and that you understand that you need to live there and you exert that right to live there. So that way you're not left to go to a shelter or somewhere until you find suitable housing. तो मुस्तफा ने पहले बात की थी कि घर के टाइटल में नाम किसका है, उसके बाद उन्होंने जिक्र किया था कि डेजिग्नेशन क्या है, कि ये किस तरह का घर है, ये बिजनेस प्रॉपर्टी है, रेंटल प्रॉपर्टी है या फिर ये रहने की जगह है। तो उसमें एक मुख्तलिफ तरीका होता है, उसको कहते हैं मैट्रिमोनियल होम। तो फिर अगर इस घर की जिसमें आप रह रही हैं वो मैट्रिमोनियल होम है तो फिर आप ये
राइट को एक्सरसाइज कर सकती हैं. In terms of asset division and compensation, if the title is only in one spouse's name, the other spouse has a claim if they put any money into the deposit of the house. Okay. Sorry, Sister Sarah, you're saying something? Yeah, there's a question here. Just briefly, if you could address that, please. Sure. Go ahead. Which one? Is it a common way how men? या पूछ रहे हैं एक रेंटल जो किराए के घर है उसके बारे में पूछ रहे हैं. अगर तो क्योंकि वो आपके टॉपिक पे और अभी जो आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से है तो अगर कर लें ले लें वो प्लीज. So what happens is with the rental home, you could just translate after. But for a rental home, this can also be a matrimonial home. But what's important for the rental home to keep in mind is that whose name is on the lease. Okay, if whoever's name is on the lease usually is the person that's responsible for rent and has the right to reside there, right? You also have to know the length of lease. Has the lease been terminated or will be terminated? If you need a new lease, then you should be able to sign a new lease with the landlord, or at least have a discussion with the landlord that we are separating and I need to continue living here and I will pay rent. So in order to live there for rental properties, you have to be able to pay the rent if your spouse is not going to pay it. And you have to be aware of how long your lease will be running for. If you're on month to month, then it shouldn't be an issue, but some leases only go for 1 year. And when the lease is terminated, then it's up to the landlord if they want to sign a new lease. Okay, तो इस बात पे कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं. पहली तो चीज़ ये है कि रेंटल एग्रीमेंट में नाम किसका है. तो अगर के हस्बैंड का नाम है तो फिर वो डिसाइड करे और वो रेंट पे करे, और अगर औरत का नाम है तो फिर सिमिलरली. तो रेंटल एग्रीमेंट में अगर के आप वहाँ पे रहना चाहती हैं तो फिर आपको रेंट पे करना पड़ेगा. आप लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट बना सकती हैं या बना सकते हैं कि हम लोग का डिवोर्स चल रहा है और ये सिलसिला हो रहा है, तो फिर रेंट अब मैं पे करूँगी, हम लोग को यहाँ रहने दो. And Moose, did you cover what we spoke about earlier in regards to even while separation is happening, they can apply for payments? Apply for support payment? Yeah, does of course. That apply here? Yeah, so it's just, so the thing is, strictly speaking, the court or any court, whoever's living at the property has to bear the ongoing cost of that property. So if you're getting paid child support, right, you can put that towards your rent because that's part of the necessities of life. You should also be getting all of the child tax benefits from the government, and that's another way to help support yourself. But legally speaking, the husband that does not live at the house or the spouse that does not live at the house is not responsible for the utilities, is not responsible for the lease payment. Whoever lives there is responsible. And they can ask for to be paid back for any money that they paid for or to rent utilities and stuff, if they want to. Okay. But yeah. मुस्तफा ने पहले जिक्र किया था कि जैसे ही आपको पता चले कि सेपरेशन होने वाली है या आपको करनी है, तो फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो पहले ले लें. और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 3 मुख्तलिफ फॉर्म हैं जो कि आपको साइन करने हैं, ताकि फिर वो जो 1 साल है सेपरेशन का उसमें आपको सपोर्ट मिल सके. तो फिर वो कह रहे हैं कि वो आपको फिर भी अप्लाई करना है, लेकिन वो जो पैसे आएंगे और फिर जो कनाडा से टैक्स बेनिफिट्स आएंगे बच्चों के लिए, उन चीज़ों से आपको अपने अखराजात पूरे करने पड़ेंगे. अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंटल प्रॉपर्टी में अगर कोई स्पाउस नहीं रह रहा है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन पेमेंट्स के लिए और उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं. तो फिर आपके जो अखराजात होंगे वो अखराजात जाएंगे, वो जो आपने फॉर्म्स फिल किए हैं जो हम लोगों ने पहले जिक्र किया था, और फिर जो Canadian Child Support Tax Benefit. Yeah.
Is that about everything, or do I need? No, that's right. It's a difficult situation. I'll be honest. There's no easy answer. इन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत ही मुश्किल तरीका है, और इस सिचुएशन में अगर के जो दूसरा स्पाउस है वो चाहे तो फिर वो रिफंड भी मांग सकता है कि इस जगह के मैंने इतने इतने पैसे दिए तो उसके मुझे पैसे वापस करो। तो इस सिचुएशन में मुस्तफा कह रहे हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से आपको एक लॉयर से बात करनी पड़ेगी ताकि फिर वो आपके केस को पूरा देख सकें और मुख्तलिफ तरीके से वो बता सकें कि आपको ये करना चाहिए। Okay. So yeah, I just wanted to explain this because it's important. If you own a property or you are jointly own a property in Ontario, before you get a part of your legal aid certificate, if you go to Legal Aid Ontario, they will want to register a lien against the property, meaning that in order to get them to pay your legal service, like your fees for legal services, they want to have a right to against your property. So before you decide to go with legal aid, you should keep in mind if you have any land or property in Ontario, that they can put a lien on that and it will appear on title. You're allowed to do that without the consent of the other spouse. So that's just something you should consider. And when you apply for legal aid, ask them about it and how it works and whether or not they'll actually register one or not. तो मुस्तफा कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर के आपके पास प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास जॉइंट प्रॉपर्टी है अपने स्पाउस के साथ और आपको लीगल एड की ज़रूरत है, तो लीगल एड में डिलेज होते हैं, मुश्किलात होती है, तो फिर इन्होंने कहा है कि लीगल एड की तरफ जाने से पहले आप ये ढूंढिए कि अगर के आपको प्रॉपर्टी पे लीन मिल सकती है तो फिर No, that's not how it is. That's not. Legal aid themselves will register the lien. हाँ, so legal aid जो है जिनके पास आप जाएंगे वो खुद लीन को रजिस्टर करेंगे ताकि फिर आपके लीगल एक्सपेंसेस पे हो सकें और फिर आपके केस पे काम हो सके. Yeah, basically. So legal aid will take care of the whole thing, right? Yes. You just have to register for it. When you apply for legal aid, you have to disclose whether you own any property and your income. So you have to. और वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी उनकी फीस फिर उससे कट जाती है. Yeah, basically. So if you sell the house, right, in your case, then they will get paid from the sale proceeds of the house as well. There's a question. That's a very before I get to that, I just have a few more slides and I do need to address it. So if you can just hold on to that question, because the next part is very important, to do with equalization and property. इस slide से सबसे ज़्यादा important चीज़ है the pension, the RSP actually. So कभी होता है आप RSP खोलते हैं बच्चे के लिए and आपको disclose करने इस RSP कितने पैसे हैं. For the property division purposes, the RSP is considered an asset of whichever account holder's name appears on that account. Because it is cash that's put aside and they can withdraw it at any time without any taxes and use it for their own purpose. It's not like a pension. So for an RESP, if it's a joint RESP, where there's, let's say, $2,000, you both are entitled to half that money in that RESP and both people can withdraw from it. If it's just in one person's name, then it is considered their asset and it's just another account that has money and that they can access. It's not a right of the child to use that money until it's paid out. Okay, तो ये जिक्र कर रहे हैं कि RESP accounts में, तो RSP accounts
कंसिडर होती हैं कि ये आपकी एसेट है, तो फिर इसमें से जब तक पैसे निकाले नहीं जाए या जब तक बेचे नहीं जाए तब तक ये चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट में और स्पाउसल सपोर्ट पेमेंट में कैलकुलेट नहीं है. Is that correct? Well, it's not considered in the, it's considered as an asset for property division. So, and I'll explain in a sec how that plays into it. If you have questions about this slide specifically, you can refer to it in your notes, and I can go back here if you need to. So the reason it's very important to know what the assets are in your financial statement and what your liabilities are in your financial statement is because you're going to be calculating your equalization payment. So equalization is, the idea is to, in addition to spouse support and child support and all of that, is to make sure that one party does not have a more economic advantage than the other party after separation and divorce. So you can explain that part. हाँ, तो इक्वलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो फिर कैनेडियन लॉ ये समझता है कि आप दोनों के पास इक्वल हिस्सा है चीज़ों में. तो फिर जब इक्वलाइजेशन होती है तो फिर उस हिसाब से डिवीजन होती है. तो फिर इसलिए बार बार मुस्तफा जो कह रहे हैं कि आपके पास रसीदें और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, इस वजह से कह रहे हैं ताकि फिर आप लोग के पास सारे लॉयर को देने के लिए चीज़ें हों कि इस टाइम पे हमारी शादी हुई थी, इस टाइम पे सेपरेशन हुआ था, इतना पैसा अकाउंट में था, इतना पैसा अकाउंट में नहीं था, वो सारी मुकम्मल चीज़ें साथ होनी चाहिए. Okay. So equalization में देखते हैं आपके assets, आपके date of marriage से आपके date of separation के तक क्या assets है आपके पास. तो जो assets मिलते हैं marriage से पहले उस assets के लिए deductions मिलते हैं, जो assets आपको obtain करते हैं separation के बाद वो भी exclude होते हैं. Okay. And कभी होता है like लगता है this is not fair, मगर it's just the law the way it is. If you make a claim for equalization, we have to follow the rules of equalization. एक case है वो court the court looked at the meher payment and whether or not the meher is a debt obligation after separation. And what it said was that if you have a contract, a nikah contract, that says that I am to pay, my spouse $20,000, that is a debt for that the spouse can claim as a debt. But if he claims it as a debt, that means he has to pay you back that $20,000 after. If he's not going to pay you, he cannot claim that as a debt. So this is just an important fact to remember, whether or not you have any meher owed to you, and if they intend to rely on it as a debt that they have to pay you. मुस्तफा ने ये हक महर की बात आई थी और ये बात बहुत ही एप्लीकेबल है हमारे सिचुएशन में. तो मुस्तफा कह रहे हैं कि एक केस हुआ था जिसमें किसी ने बोला था कि मेरा हक महर जो मैंने अभी तक अपनी बीवी को दिया नहीं है वो मेरा डेट है. तो फिर मुस्तफा कह रहे हैं कि उस केस के मुताबिक उसको पहले वो पैसे वापस करने हैं और फिर वो उसको डेट क्लेम कर सकता है. Not necessarily. Like he can claim it as a debt, but if he does claim it as a debt, then he has to eventually pay you. हाँ, तो इनका कहने का ये मतलब है कि वो डेट इक्वलाइजेशन के फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, लेकिन इक्वलाइजेशन पे खत्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो फिर उनको आपको $20,000 देने जरूरी है. Is that accurate? Yeah. Okay. So the way we calculate equalization is called net family property.
This is all your assets and debts the day you separated versus the day you got married. तो जो assets आपने accumulate करी marriage से और जो debts आप accumulate करे marriage से, आप देखते हैं जब आप separate करते हैं, that's why separation is very important. आपको need to see that as of that date, how much assets did you have and how much debts did you have because of the marriage. So this calculation like makes it very easy to understand. So if you think that at the date of the valuation date, the day you separate, he has a assets of 500,000, but he has debts of 300,000. His net family property is 200,000. If the wife, same thing, but has 100,000, calculation is very simple. Ab difference dekhte hain, divided by 2. Whoever has the greater net family property, is example mein husband, wife se zyada net family property hai, meaning he has to make a payment to her of $50,000. Okay. यह excluded property की concept थोड़ा सा abstract है और आपको lawyer के साथ बात करने आपकी कौन सी property exclude करते हैं, मगर there's some very specific requirements. One was जो property आपको gift या inheritance में मिलते हैं, third party से आना चाहिए, meaning it could be your parents, it could be a friend, it could be a sibling, as long as it's not your spouse. Or it has to be after the date of marriage. So marriage ke baad kuch cheezein mile, or it has to still be owned at the date of separation. So if you example, someone gifted you a car, magar you sold it before you separated, then uske liye it doesn't go into your net family property calculation because you didn't own it at the end of the marriage. A lot of example you get जब शादी होते हैं, like you आपको jewelry और ऐसी चीज मिलते हैं शादी के बाद, right? या कोई और gifts है जैसे like housewarming gifts, they give you clothes or special jewelry or something. That gift you have to show proof that this gift या कभी मिलते हैं gift receipt और ऐसी चीजें. Keep that proof, evidence if you have evidence, or if the people have given you a card or something to show that this was a gift from them. You can exclude that from your net family property from the calculation because this was a gift from you and this should not be they had nothing to do with the actual marriage or obtaining it because you were married. And this is a complex issue and you should आपको lawyer के साथ बात करने इस मामले में. Yeah, go ahead. मुस्तफा कह रहे हैं कि कुछ चीजें इक्वलाइजेशन के अंदर नहीं कंसिडर हुई जाती. वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको तोहफे मिले हैं शादी के वक्त या ये सारी चीजें, तो मुस्तफा कह रहे हैं कि उनके आप रिसीट रखिए या फिर आप कार्ड रख लीजिए कि उतना जेवर मुझे मेरी सास ने दिया था या फिर इतना जेवर मेरे ऐसी रिंग या ऐसी घड़ी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी गर्ल साइड से, ताकि फिर वो आपके डिडक्शन में नहीं आएगी क्योंकि वो शादी के साथ रिलेटेड नहीं थी. तो इक्वलाइजेशन उन चीजों में होती है जो कि शादी से रिलेटेड होती है. तो अगर आपको गिफ्ट मिला है कि अगर कोई तीसरा बंदा, अगर के आपका भाई या फिर लड़के की बहन या लड़के का भाई ने $1,000 कैश दिया है, तो फिर वो इक्वलाइजेशन में कंसिडर नहीं होगा सो लॉन्ग कि आपके पास प्रूफ है और आप उसको फिर कह सकते हैं कि ये मेरा अपना है और ये शादी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, तो इस वजह से ये इक्वलाइजेशन में ऐड नहीं होना चाहिए. इस तरह से बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें. तो मुस्तफा कह रहे हैं कि आप लॉयर से बात करिए ताकि फिर वो आपको सही तरह बता सके क्या चीज मानी जा सकती है और क्या चीज मानी नहीं जा सकती. Thanks. Yeah, that's correct. Just to answer the quick question, yeah. If anyone does. Okay, so to answer this question simply, it really depends on the asset or
the property, whatever the thing is. The courts have taken what's called a common sense approach. So you look at the thing, you look at best way to determine where did this thing come from. They don't go as detailed as they do for like certain other areas, contract or law, but in family law, it's more practical. Okay, maybe you have text message, or maybe you have like a picture of or a video that shows that, you know, this person gave me the gift. You try anything to prove, at least to convince the court at least a little bit, that there's a better chance that this was a gift from my mother-in-law and not a gift from my husband, right? So it really depends on the circumstances, but it doesn't have to be a receipt. It can be anything that shows that there's a possibility that this was a gift or this was inheritance. मुस्तफा कह रहे हैं कि एक सवाल पूछा गया था कि अगर हमारे पास रिसीट नहीं हो या फिर कार्ड नहीं हो, क्योंकि ऐसी चीजें तो हर वक्त नहीं मिलती हैं, तो फिर उनका जवाब ये है कि कोर्ट अंदाजा लगाता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। तो अगर के आप कोर्ट को कोई वीडियो दिखा दें या फिर आप कोई तस्वीर दिखा दें कि मैं अपनी सास के साथ खड़ी हुई और आप लोग ने तस्वीर ली और बीच में जेवर पड़ा, या ऐसी कोई भी चीज आप दिखा दें कि आप किसी को दिखा सकें कि ये मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया था, ये मुझे किसी और ने दिया था, चाहे वो सास हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो, एज लॉन्ग एज वो हस्बैंड ने नहीं दिया, वो फिर इक्वलाइजेशन में कंसिडर नहीं होगा, लेकिन ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसलिए मुस्तफा बार बार कह रहे हैं कि आपको लॉयर से बात करनी पड़ेगी इन चीजों के बारे में, ताकि आपके केस इन पर्टिकुलर के हिसाब से वो कह सकें, क्योंकि कुछ ऐसे भी। Yeah, and the other thing is sometimes if you go to trial, then what would be important for the court is to actually have that person as a witness. So if your father gifted you a car that you owned on separation date, then your father should be a witness at trial or give an affidavit as evidence that, yes, I gave her this, or I was there, and so on, and give that evidence to the court. So as a witness or a statement from them is also can be used as evidence. जी, तो मुस्तफा ये कह रहे हैं कि अगर के आगे जाके इसकी वजह हुई या फिर ज़रूरत पड़ी, तो फिर फर्ज करें कि आपके वालिद ने आपको एक गाड़ी दी और आपके पास वो अभी गाड़ी है, तो फिर आप अपने वालिद से एक कागजात साइन करवा सकते हैं, उसको एफिडेविट कहते हैं, कि ये गाड़ी मैंने अपनी बेटी को दी थी या बेटे को दी थी एज अ गिफ्ट, तो फिर उस पे इक्वलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो लॉयर का तारुफ करना बहुत जरूरी है। Okay. And कभी होता है that this is my last slide. If there's questions, if there's time for questions, we'll go for it. कभी होता है there's a dispute over the ownership of a property, be it a car, be it a lawnmower, it could be anything. And आपको court को apply करने to determine whose ownership is this asset. So there is a way to do that, and under Section 10 of the Family Law Act, and you can actually ask your lawyer that, okay, there's a dispute. They say that it's their property. I say it's my property. You can apply to the court to determine whose property is this and how should it be dealt with. If they want to keep, say it's a car, they want to keep the car, but it's your car, you can ask the court that, okay, you know what? They keep the car, but I'm asking compensation for them to pay me for that car. So this is also an option available. मुस्तफा कह रहे हैं कि जो घर में सारी चीजें होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि ये मेरा है कि तुम्हारा है। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड कह रहा है कि नहीं, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, ये गाड़ी तुमने ली थी, अपने नाम पे ली थी, लेकिन मुझे गाड़ी की ज़रूरत है काम पे जाने, तो फिर मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो फिर वो कोर्ट को कह सकता है, और फिर आप कोर्ट को कह सकती हैं, या फिर वाइस वर्सा, कि ठीक है ये गाड़ी ले ले, लेकिन फिर मुझे कुछ और चाहिए। तो फिर ये ओनरशिप
के उस पर बात होती है, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसके लिए लॉयर की ज़रूरत होती है। आपका लॉयर बैठता है और फिर सामने वाले को लॉयर बैठता है और फिर वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं जिनमें बहुत कैलकुलेशन होती है। Is that accurate or is that Yeah, wrong? more or less. But the thing with ownership is if the thing has an like for a car, you have an ownership document, so you know it could be that it's your car that you got as a gift, but the ownership is in his name, right? And or if it's a different asset where there's no ownership like ascribed to it, then this is when you want to take this route. But I just wanted people to know that this is an option available to them if it comes to that case. But besides that, I just want to open the floor to if there's any questions, Sister Sarah, but I'm okay to take questions. I know we went over time. हाँ नहीं, शुक्रिया मुस्तफ़ा। थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली ऊपर गए हुए हैं। अभी आप अवेलेबल हो और Yeah, I'm available at least 20 minutes. If you want, I can do another 20 minutes. और बाकी जो ऑडियंस है उनमें से प्लीज अपना माइक ओपन करके पूछ लें, जो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। आप चैट पे कर सकते हैं, अपने सवाल टाइप भी कर सकते हैं, या माइक ओपन करके। सो फातिमा प्लीज, आपने हाथ उठाया हुआ है, प्लीज पूछ लें। और मुस्तफ़ा अगर आप यू कैन अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना बंद कर दें तो sure, I can stop. फिर हम देख सकेंगे। Okay, thank you. जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि शुरू में हम बात कर रहे थे कि 90 डेज की बात कर रहे थे कि 90 डेज सेपरेशन होनी, 1 ईयर सेपरेशन होनी ज़रूरी है जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सेपरेट होना है। तो और अगर किसी ने कह दिया है कि तलाक का वर्ड यूज़ कर लिया है कि भाई मैंने तलाक दी है तुमको और अब मैं साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या ये हमारी फर्स्ट तलाक कंसिडर होगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? और उसके बाद अगर हम जिस तरह आपने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर दोबारा से पैचअप कर लेते हैं तो वो दोबारा से एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह सकते हैं, तो क्या ये पहली तलाक कंसिडर होगी? जी, so it's not very specific because आपको देखना चाहिए like the next day what happened, right? So आज आपने तलाक दिया इसलिए गुस्से में है, right? It happens all the time. Magar after 2-3 days, he's living like normal, you're living like normal. उसका मतलब है जो पहले तलाक है वो separation date नहीं बन गया because it really wasn't an actual intention. He just said it out of anger. मगर होता है तलाक दिया फिर वो घर से निकले, you don't know where he is, he's been gone for a month, then you would take that as okay, he wants to be separated. Or हो सकता है जो ये पहले तलाक दिया फिर आप, then for you maybe he didn't mean it, but for you you're like, I am done, I'm not okay with this anymore, you keep giving me talaqs and everything, as far as I'm concerned I'm done from this relationship. फिर उसके बाद your actions are that I'm not living with you like your wife. Maybe I'll do a few things here and there, but I'm done. That is considered separation, as long as one person has the intention. Okay. Sorry, okay. I went to English, but if you understand that. Yeah, thank you. So nice of you. Yeah. So, जो डिफरेंस है इस्लामिक तलाक का, उसमें भी जो इंटरप्रिटेशन आप फॉलो कर रहे हैं, तीन वाली जो 3 कंसेक्यूटिव होनी चाहिए और साथ साथ होनी चाहिए, या वो उसमें भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं किस तरह, तो वो सेपरेट है। और जो कनेडियन लॉ का जो एस्पेक्ट है और वो जिस तरह सेपरेशन को डिफाइन करता है वो डिफरेंट, वो सेपरेट है जी। Yeah, they're separate, and the courts they're not going to they don't consider the religious rulings. They don't decide that. They just care आपकी intention तलाक के बाद क्या था. That's all they care about. सही, thank you, so nice of you. और मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट में इमाम कौंसिल से भी हेल्प ली जा सकती है। आप मस्जिद में मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं अपने रिलीजियस एस्पेक्ट की वजह से।
Gee, so this is a very good point, Sister Sarah, because at the end of the day, if you're Muslim and you're practicing, you should remember that there are the Canadian laws, but there are also, I mean, at the end of the day, if you're a Muslim, you follow Allah's laws as well. So you should remember both whenever you're going through the family process. And Divorce Act may be there is an obligation for every lawyer when they're filling out the divorce application. They have to actually certify that I did advise my client to reconcile their marriage. So just Islam may be here, you know, there's a time to at least try to get back together. Even here, they have the same thing that the lawyer has an obligation to tell their client, can we maybe get you guys back together? Obviously, it's up to you whether you want to, but it's important to remember that marriage is very, if you can work on it, if both people can work on it, great. If not, then you know, try to act in a way that's at the end of the day, it's not just about the money, it's not about the system, it's about your safety, it's about your akhirah as well. So I don't want to comment too much on the Islam part. I'm not a scholar or imam, but I'm just giving my own opinion on that, even from my experience. That's true. At the same time, imam भी different उनकी होती हैं, approaches होती हैं, उनकी different interpretations होती हैं, उनके ज़ाविये होते हैं. इसलिए जिस इमाम को अप्रोच कर रहे हैं उसके you know उनकी क्या knowledge base है, उनकी क्या perspectives हैं, और maybe मुख्तलिफ इमामों से भी इस तरह बंदा ले सकता है, एडवाइस ले सकता है और अपना केस डिस्कस कर सकते हैं. और yeah, so keep that in mind. वो भी ज़हन में बंदा रखें. मेरा सवाल था, और मे बी ये भी टाइम नहीं होगा इसमें, लेकिन काफी दफा हम लोगों को अपने इर्द-गिर्द जो केसेस हो रहे होते हैं, जिस तरह मैंने चैट पे लिखा था कि ये वाली काफी स्ट्रैटेजी लोग इस्तेमाल करते हैं कि सेपरेशन का प्लान है और डिवोर्स का प्लान किया हुआ है और बीवी को पाकिस्तान छोड़ आए हैं 1 साल के लिए, और फिर वो प्रॉपर्टी पीछे से बेच दी है और उसको फिर वो डिवाइड नहीं हो सकती, और फिर वो जो पाकिस्तान का जो डाइवोर्स है वो लाके और यहाँ कर लेते हैं, you know, एक्सेप्ट हो जाती है दैट डाइवोर्स. सो जो प्रॉपर्टी है वो औरत को बिल्कुल शेयर, इस स्ट्रैटेजी से फिर औरत को अपना बिल्कुल शेयर वो मैट्रिमोनियल होम में भी नहीं मिलता, जो शादी वाला घर है. तो इस तरह के कौन से कॉमन तरीके हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं एडवांटेज लेने के लिए, डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवांटेज लेने के लिए इस लिहाज से, लेकिन बाकी तरीके भी हो सकते हैं. मुस्तफा, आप म्यूट पे हैं. You're on mute, Mus. Wissam, can you unmute Mustafa maybe? Sorry, I had an issue with my computer's pulled away for a second. So this is a good question. Taz, I'll ask you to translate in a second. But so the first thing you have to remember is that just because they got the divorce and everything, and they sold off the properties, doesn't mean you can't still make a claim. So in one of my slides, I didn't get to touch on it, but there's a time limitation, right? Of when you can bring an equalization claim. One of them is 6 years after separation, 2 years after divorce, and 6 months after a spouse dies. So in this case, if you know that you got divorced, you can put an application right away, right? Again, in Ontario for making your claims like equalization.
spousal support, child support, and any property division claims. You can still make those claims. But if you wait too long, like more than 2 years after divorce, then you'll run into a different issue that, too much time has passed. So the hardest part of this is to get the evidence of how much the property sold and which properties were there, because they're going to try to hide it. So if you're, I think the first thing is, if you have a power of attorney, a lot of spouses give power of attorney to maybe their husband or someone else in Pakistan. You should revoke those power of attorneys so they can't sell the property without your consent. The second thing is, if it's sold, I mean, you have to try to find, I think in Pakistan, they have a registry as well for any properties. So in the registry, we'll keep a record of all the property that is sold, who has title, and sometimes how much it was sold for. Because I think they're like a British system as well. So you have to check if you can find someone over there to look in the registry to see who bought the property and when did the transfer of title happen. In Ontario, they have that. So you can pay $30 and get the whole title and everything of any property you want. हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसे है. Task, can you just explain? तो मुस्तफा ने 2-3 बातें की थी. उन्हें सबसे पहले तो ये बोला है कि जब डिवोर्स होती है या फिर सेपरेशन होती है तो फिर उसके मुख्तलिफ टाइम होता है आपके पास कि आप क्लेम कर सकते हैं इक्वलाइजेशन के लिए. तो फिर अगर सेपरेशन हुई है तो फिर सेपरेशन डेट से आपके पास 6 साल का वक्त होता है कि आप क्लेम कर सकते हैं कि 6 साल पहले हमारी सेपरेशन हुई थी, उस वक्त हमारे पास ये प्रॉपर्टी, ये एसेट्स थी. तो इन्होंने पहले भी मेंशन किया था कि आपको सारे अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. तो फिर दूसरा एक मुख्तलिफ तरीका है, वो ये होता है कि 2 years आफ्टर डिवोर्स के मुकम्मल होने के बाद भी आपके पास 2 साल हैं कि आप इक्वलाइजेशन का क्लेम कर सकते हैं. लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो फिर आपका क्लेम बहुत मुश्किल हो जाता है. और मुस्तफा ने ये भी बात की थी कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी कितने की थी, किसने खरीदी, कब बेची, ये सारी चीजें आपको मिलनी जरूरी है. और उन्होंने ये कहा है कि कनाडा में एक रजिस्ट्री है जो कि आप $30 पे कर सकते हैं और फिर वो उस प्रॉपर्टी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, इतने पे बिकी है, इतने में खरीदी गई थी, इस डेट पे बिकी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो फिर ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए. एक और इन्होंने बहुत मुख्तलिफ बात की थी. उन्होंने कहा था कि पावर ऑफ अटर्नी, कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या कोई भी चीज आपके नाम पे है, कोई आपकी इजाजत के बगैर उसको सेल नहीं कर सकता. लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ जो भी वहां का रहने वाला होता है उसके पास पावर ऑफ अटर्नी होती है. तो फिर मुस्तफा ने ये सलाह दी है कि अगर आप कहीं जा रही हैं या आप कहीं जा रहे हैं तो फिर आप पावर ऑफ अटर्नी रिवोक करिए, फिर जाइए. और इन्होंने बार बार ये इस बात का जिक्र किया था कि सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या अकाउंट्स हैं और क्या क्या चीजें हैं, कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो फिर आपके पास प्रूफ है हर चीज का. No, I think the only thing is that जैसे कनाडा में एक रजिस्ट्री होता, लैंड की रजिस्ट्री होता है, हो सकता है पाकिस्तान में भी लैंड रजिस्ट्री है. तो आपको देखने आपके नाम में कोई प्रॉपर्टीज है, उस टाइटल, इसके प्रॉपर्टी के टाइटल आपको कॉपी लेना है और आपको देखना है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है जो भी रजिस्ट्री सिस्टम है पाकिस्तान में या जो भी कंट्री में है, मुल्क में. दूसरी चीज है एक स्ट्रैटेजी. आई जस्ट थॉट ऑफ दिस, राइट. हो सकता है आप maybe your spouse doesn't know you want to separate, but you want to get the information, right? आप बोल सकते हैं okay, let's make a will, right? जब आप will बनाते हैं सारे properties उस will में डालते हैं, right? So with that you're able to actually understand who has what properties and where they are, in case you can't keep a track of it. So if you have a will,
you can open that discussion so that you know exactly what properties are there. And if the husband has properties he's not telling you about, he might end up talking about them when you make your will. And then like using the will as a way to try to find out what he has or does not have. Because at the end of the day, if he dies, it has to go somewhere. And if you're making a will, he's got to include it in his will. This is just what I think, but it might not always work. मुस्तफा ये कह रहे हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत मुश्किल होती है. स्पेशली यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स ये होते हैं कि काम कर रहे इंसान लेकिन उसने एक सेपरेट अकाउंट रखा हुआ है या फिर कैश रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बिस्तर के अंदर डाला हुआ है, जो भी किया हुआ है. तो फिर इन्होंने मशवरा दिया है कि ये इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत मुश्किल होती है अगर कि आपने नियत, हम लोग ने शुरुआत में ये बात की थी कि जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सोच समझ के सारा काम करना है. तो इनका एक ये मशवरा है कि अगर आपने नियत कर लिया कि आपको इस तरह से नहीं रहना है और आपको यहाँ नहीं रहना है, तो फिर इनका मशवरा ये है कि आप एक वसीयत लिख लीजिए. क्योंकि वसीयत में तो सबको सारी चीजें डालनी जरूरी होती हैं कि क्या क्या मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्या क्या मेरे पास कैश है क्या नहीं है, ताकि फिर आपके पास एक आइडिया हो जाए, आपको एक समझ हो जाए कि इतनी चीजें जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट या फिर उस इंफॉर्मेशन के साथ आप इंटरैक्ट कर सकती हैं और लॉयर से मशवरा लेके और लॉ एनफोर्समेंट से अगर जरूरत पड़ी तो मशवरा लेके फिर आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं. और किसी के सवाल तो प्लीज अनम्यूट कर लें, पूछ लें. मे बी एक आखिरी क्वेश्चन करके और फिर हम खत्म कर लेते हैं. रोजीना, आपकी आवाज नहीं आ रही है. I think she has a question. She's speaking, but I can't hear her. मेरा क्वेश्चन है कि समटाइम पर्पसली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में औरत को पाकिस्तान ले जाके उसको डाइवोर्स की जाती है और उससे सारे पेपर्स और सारी चीज़ें ले ली जाती हैं. और मैनी केस मेरे नोटिस में आए हैं जिसमें पर्पसली औरतों को पाकिस्तान लेके जाया गया और उनको डाइवोर्स करके उनसे सारे पासपोर्ट और दूसरे पेपर्स ले लिए गए हैं, और फिर उन्होंने एम्बेसी से कांटेक्ट करके वो दोबारा कनाडा आके अपने राइट्स लिए हैं. तो आप इसके बारे में कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे? Okay. So the question is, if they take all the documentations, get a divorce, and they come back to Canada and then they seek to make the claims in Canada as well for the same property? Is that the question? No. So the husband takes the wife to Pakistan. Pakistan में जाके divorce हो रही है. He takes away all the documents. And this is, you're right, Sadia, काफी common होता है. And then he leaves her there, he comes back, and then the woman, his ex-wife, she contacts the embassy. She's able to come to Canada and then files for divorce, and the procedure is started. She wants to know if अगर कोई additional कोई इस तरह की कोई और approach या कोई additional चीज advice दे सके इस cases में. It's difficult to say. I mean, you know, she doesn't have to get on the plane, right? If she can avoid it, that's one thing. Okay, that's obvious. What do you mean by that? कि divorce procedures जो हैं वो पाकिस्तान से ही हो सकेंगे? नहीं, मतलब if you're married to someone for any amount of time, right? You kind of have an idea of what they're planning. If they're trying to take you to Pakistan and you feel that they might be plotting something like this, refuse to go. The authorities will never force you to get on a plane. They'll never force you to leave the country just like that.
नहीं but this is a very common practice. बहुत लोगों के साथ इस तरह होता है और औरतें mindset और वो mentally इतनी dependent हो जाती हैं कि at that time वो refuse नहीं कर सकती और confused होती हैं, उनको drug करके at times लेके जाया जाता है. Okay. So at the end of the day, sorry, सादिया भी कुछ कहना चाह रही. जी. और ये मतलब लाइव केसेस हैं, लाइक मेरे सामने हुए हैं जिसमें उनको पर्पसली पाकिस्तान लेके जाके उनसे सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारा उनसे ऑथराइजेशन लेने के बाद उनको वहाँ पे डाइवोर्स दी गई है ताकि वो फर्दर कुछ भी अपने राइट्स ना ले सकें. लेकिन उन लेडीज़ ने फिर कैनेडियन एम्बेसी में कांटेक्ट किया है और फिर वहाँ से वो हेल्प लेके दोबारा कनाडा आके उन्होंने अपना राइट यूज़ किया है. So, and as far as I mean, that's the right way to go. What happens here is that when you start a court case, like, you have to show what you can prove is what you can get, really, right? So you need to establish, one, that this was a relationship of abuse, that whatever happened wasn't your own will. That's one thing. And then the next thing is, if there is property, these things and whatever, you have to show proof of ownership of those properties and request disclosure of that. Ultimately, it's going to come in those kind of cases. I think it's going to be a situation where you're going to end up in trial, and at trial you're going to have various witnesses, or that, like, whether it's friends, family, or other people that will testify to, you know, the relationship, that will testify to the ownership of property, that will testify to, you know, the involvement of him. You can look at and the thing is, if you're going back to Pakistan, there is a chance that you're going to have people you know there that can obtain the documentation from the government authorities. Or you're saying no, there's no one there? Yeah, I guess eventually वो contact करती हैं Canadian embassy से और वहाँ से फिर documentation और copies. No, what I'm saying is that I'm talking about, you're already back in Canada. You started a court case in Canada. You need to obtain the evidence from Pakistan, right? Oh. So if there's properties that were sold that were in your name, like I said before, there's going to be a record of the sale. There's going to be records showing. The issue becomes with things that are not recorded, right? So, for example, maybe jewelry is not recorded. Any cash, it's hard to trace. The honest truth is that the courts are not complex enough to show, to go into finding out what happens with those things. And like I said before, you can get whatever you can prove. So you have to be able to show it to some degree, even if it's one message from somebody, one email. That at least is a starting point to show that there is some truth in what I'm saying about what happened over there. Right. So it's not an easy answer. Yeah, basically it's a मुश्किल है और यही है, best case scenario यही है कि embassy में जाके और जब contact करें और फिर इधर आके case लड़ें lawyer के साथ, वो आपको advice करेगा कौन से evidence हैं, कौन से आपकी क्या चीजें चाहिए और उसके मुताबिक फिर lawyer की advice के मुताबिक फिर आगे case चलेगा. I see that, yeah, and it's not easy. It's going to be hard, but you have to keep trying and see all the options. I see that Rosina sent a bunch of different messages or questions. There was one that was very important about online trading or stock trading that is worth mentioning. Oh, the side business. Okay, I see that as well. Yeah. Yeah. So one way we look at side business is their side income. A lot of times that they're going to have accounts somewhere where the money is going in and out from. So we always request bank statements for a certain period of time. So let's say you were married in the last 3 years, you get all the bank statements, personal accounts, and he has. He has an obligation to provide that.
if he's not giving it, but you at least know which bank he does banking with or something, then we can even do a motion in court for the bank to give you the information directly. The court can order a bank or any what do you call it, institution to disclose information, and they legally have to disclose it, but you have to go to a motion to get that information. So for example, I had to get information from Manulife and RBC because the husband refused to give those statements. We took them to court, and then we got the order, and then RBC and Manulife sent me the information directly of all his account transactions, of all of that. And then we go back into the transaction and see, okay, 3,000 came in money here, this much money came in this month. And then we look at, okay, we put it to the court that the husband is making, he says he's making 10,000 a year, but you know what? He has a side business, and look at all this money that's going in his account for these many years and these many months. So there's ways to go around it. It just takes some time. Okay. अभी 4 बज गए हैं, and I know कि सारों ने extra time spend किया हुआ है. Please, Rosina, would it be okay कि ये वाला question next session में address कर दे? Please, thank you so much. I think अभी wrap करते हैं. There are 2 messages that I just want to. Would it be okay? अगर आप सवाल हैं, ये सवाल आप डायरेक्टली मुस्तफा को भी ईमेल कर सकते हैं, मिसाम को ईमेल करके she can connect you with मुस्तफा. मिसाम का ईमेल आपके पास है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या ईमेल से कर ले, या नेक्स्ट सेशन के लिए आप रहने दें. So we request that. Yeah, the best is to just send the question to Wissam, and then I can see which questions come in and then address that as much as I can. So wonderful. Thank you so much. So Mustafa or Tosin, आपकी presence का और आपके time का, और we can wrap up, and inshallah next Thursday inshallah मुलाकात होगी. Thank you. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. You can stop the recording.